Yeah, sure. Distinct pleasure to welcome you all to today's speaker session, Samvad. I am Palak Mishra, the organizing head of Sankalp, and it is my honor to host All India Rank 9 Ms. Kanika Goel ma'am, a distinguished IS officer from the 2022 batch. Ma'am's remarkable journey serves as a beacon of inspiration for all the aspiring civil servants. Hailing from Kaithal, Haryana, her passion for civil services was ignited during her school days, and she has since persevered to achieve excellence. A political science graduate from Lady Shri Ram College, University of Delhi, her dedication and family support have been instrumental in her success, because of which she cleared the UPSC exam in the very second attempt with All India Rank 9. Today, Kanika Goel ma'am will enlighten us on the topic Small Steps, Big Impact, how daily habits lead to UPSC success. Her invaluable insights and expertise will undoubtedly guide and motivate us. Before we begin, I'd like to let us welcome Kanika Goel ma'am for this inspiring session. Hello, everyone. I guess I'm audible to all. Firstly, I'd like to extend my heartfelt thanks to Sankal for providing me with this opportunity. It actually feels like this transports me back to around 5 years back when I was in LSR in college, preparing or deciding over the same. And I was struggling with my ways around whether I'll be able to like decide on the resources, whatever course I've set for myself, I'll be doing it or not. And the reason I did pick up the topic for today, that is small steps, big impacts, because it's actually about the small steps which matter, which we take in our daily lives, which decide the course of our life in any journey, as I've usually said, that whatever we decide in our life, it's about the small things which we do to achieve that particular goal. And the same thing is for UPSC. I hope that most of the students who are there today listening to me are college students in their second year or third year who are looking forward and like are in the middle of saying whether to go for UPSC or not, like how to prepare for UPSC and with n number of doubts about it. So I just hope with my presentation I'll be able to clear some of like these doubts. So Palak, shall I start with the presentation or like should we go some other way around? Ma'am, we can start with presentation. Okay, I'll start with presentation first, but yeah, this is the presentation. They have got it for me. So this is a small presentation. This is nothing much, and most of it is just like any other topic talk which you may have had listened to before. So nothing more over it, but I did try to make it around the topic only, like how having a routine, how having like things much more clearer when you start preparing actually help you to achieve this particular goal. So let's start. Presently, I'm posted in Hisar as Assistant Commissioner under training. This is 1 year of probation which we have where we in the district do learn about a lot of things. Like we are in the field looking at the district administration, trying to understand it and all. So let me now take you to the topic. Can we move to the next slide, Palak? Yeah, The next first after thing this, first, like what can be the steps? Like what are these steps which you take? So first step is actually deciding on the exam. I did decide a lot early when I was in my 10th standard, but many of us do decide when we are in our college whether to appear for this exam or not. Many of us are just in a dilemma whether because this exam actually decides like demands a lot from anybody who is trying to prepare for this exam. So like the first step, which is which which is not a small step in its own sense, which is a step which you take towards this exam, and this has to be much more clearer. So I'd like to like convey it to you when you are deciding for the exam. You decide with a pen and piece of paper, write it down whether this thing is going to work for you or not. Because for this exam, if you are applying for this exam, you have to give up on placements, you have to give up on your career. Like at max, when you are actually appearing for this exam, it will keep you unemployed for a good amount of period. So all these factors, all these posts which are going into are compromising you of like a major benefit which you would have or major opportunity which you would have had in your hand, you are leaving it out because you decide to prepare for this exam. You need to clear it out whether you want to enter in this exam or not. Then when you decide that you need to enter in this exam and yes, you would be appearing for this exam,
then you need to start prepare. Now, this step to prepare is the next step. Once you have decided, now you have decided, you just not go on telling others that I've decided and I'll be becoming an IAS, I'll be appearing for UPSC and doing all that stuff. Now, after deciding, the step is to start preparing. Start preparing when? You don't need to start preparing in your seventh standard if you decide like me, or you don't need to start preparing in your first year, even if you decide that early. This exam at a max, if you do a consistent preparation, require 1.5 year, 1.5 year of effort. And that's the way you prepare for it. But like if you are in your third year, if you are in, like I dedicatedly used to tell you all, started preparing in my third year only. From my third year, I had a very clear cut cycle and what all I would be putting in for this exam, what all is my book list, and I won't be going out of that particular book list. And that did help me off. So the next step is to start preparing, putting on your shoes, and yes, I'll be getting into a routine. These are going to be my things, and then you start to prepare. Now, one more step which can be there is to move out. Like if you are staying at your home, you may feel like that I need to go out and prepare in ORN, though that's not required. I didn't do the same. Or moving out to some other, like moving out to some other area. So like it depends on the person. You don't need to move out for sure. And then like each step like this is going to be crucial in setting the foundation for your success. Then we move to the next thing. Palak, like a slide before that. Like these were some of the steps which I did take. We'll get back to it later. The next one, Palak. Now this colorful thing which you saw, this used to be my schedule when I was preparing in my college. So what I did, like when I decided that yes, now in my third year I'll be preparing. So there is a, like in the U we do have tutorials which are there and which you can choose when to have that or not. So what I used to do in the morning, I used to wake up around 6, ensure that before the class I'm completing my newspaper, then going for the class. Whatever period I have, I'll attend that, then have a gap, come back to my room, prepare for UPSC. If I have one more period, I'll go back and then again prepare for UPSC. And after 7, I'll be doing my college work. Then I'd probably go to sleep or read some book and then go to sleep. So this is a routine which I had set for myself, which did ensure that I'm able to prepare well, or I'm in a routine. I have things clear in my mind, and I was actually able to proceed with my book list also. Now the next slide. So what a college student can make sure of. So you fix your priorities well, then you fix a schedule. Then when you have fixed both of these, the first thing first, you pick up your syllabus for UPSC. Syllabus has everything. Like the syllabus is in your, like is with you. You by heart that syllabus, you learn that well. You ensure that you start understanding bits and pieces of it. Then you connect it with current affairs. Now, when you are done with that particular step, you go to the book list. Like these are the books which are available in the market, and these are the books which I'd like to decide. You can decide any book. It's not that you need to read some preface to it, some conclusion to it, some reviews to it. It's usually that all of the books are mostly same, all the coaching notes are mostly same, and you can pick any of them up in because that's just a normal notes kind of language, academic, not academic language or a novel kind of language that'll have your interest and you'll be feeling like reading that book. That they are just raw notes which you need to like by heart within a period of time. So all of them are going to look good at the first sight. After 3-4 days scary, and after a week you just want to change your source. But you need, like once you have decided it, stick with it, because that actually helps. After 2 months, if you change that source, whatever you have gathered from that source, you'll be losing that. Whatever subconscious memory, or the memory of just an image of pages which you have faded in your mind, that will also go out. So now you stick to a particular big book list. And then after that, you pick up previous year questions, which is actually the key to everything, like which will actually be the link to the syllabus and to your book list, which will help you out to sort the things out. Like what is the UPSC's demand from the syllabus which UPSC has given to me, with syllabus, with book list, and the previous year questions. Now this is the circle which you are going to stick around, and then one newspaper or two newspaper, howsoever you may feel like. Now, being a college student, you also need to decide on your optional. Like for most of the DU students, what I feel is that it's better to take up your graduation subject as your optional. I took a PSIR as my optional. But if you want to decide on some other option, can we move to next slide, Palak? If you want to decide like some other option, you read its syllabus first. Then you can look at the resources which are available in the market. It's usually that PSIR, then anthropology, I guess law also, sociology. They have got
some resources which are available in the market, and the reason, like, they are most taken optional for that reason also. Then is there any guidance which is available in the market, and do you have general interest for the same? So these are the things which everyone talks about. But for optional, one thing which I'm telling you, and which you may have had been told before also, is that for optional, you need to show the examiner that you have graduation level understanding for the same. Like, you have all that academic knowledge, you have grasp over all that terminology which is required, and you are able to summarize your answers well in front of the examiner. So you can have a proper analysis the way a scholar of political science, a scholar of sociology, a scholar of economics need to have. So that level of interest, if that's there with that particular subject, and the resources are also available to ensure or to make sure that you are able to prepare it in that sense, you take up that option. But optional would require a good level of grasp and good level of time which you would be putting on it. Next slide, Pala. This was about general studies. Now for general studies, again, a book list works. My copy of syllabus on the table, and that is one of the basic habits which I had. Then you integrate sleep, current affairs with it. And now when you are starting with it, so when in college you have decided, like, I'll be preparing for UPSC. Once you have decided, you better start than to just muddle around the things. Like, I've decided I'll be watching some proper stock, I'll be watching some video over internet, I'll be just looking out at the syllabus and then keeping it around at some place, then forgetting about it, going out with my friends, telling them that now I'm preparing for UPSC. That doesn't make work. If you have decided, like, there's one quote which I used to write in ethics, like, staring at the river doesn't allow you to cross that river. You actually need to make an effort or use the bridge which is there to cross the river. So start making effort after that. Once you have decided for the same, start developing a strategy, start developing a book list, having your own mentors, and everything. Next slide. This is about ethics. Ethics, again, like, when you are starting, first thing you do, you learn the syllabus. The second step you do, like for ethics, again, you need to put in some terminology in your paper. Now, syllabus will provide you with much of the terminologies. For you to understand those terminologies, you can pick up one or the other book or some small size handbook for the same, which will allow you to put the concepts which you see around yourself in daily life, or whatever you are reading in newspaper, or whatever you are reading from Better India or some other website. You're able to integrate all those examples with the concepts and are able to present them in your answer. Next slide, please. Essay, again, essay, you need not think about it for the moment, because for essay, when you are writing it, a lot of content is required, and that will be coming from GS. And in the end, only you'll be able to develop your essay well, because you will have good amount of content from plethora of areas which you'll be able to integrate in your essay. And the same does apply to philosophical essays as well. But you can read newspaper editorials and understand the way they are constructing their arguments, so that you are able to construct your arguments in that sense as well. Now, we won't go to the conclusion, Palak. We'll just go to the slide which we missed in the beginning. Then next. Yeah, this slide. Like, these were some of the small habits which I had when I was preparing. I used to meditate, or I used to do pranayama. Then I used to journal my thoughts out. Like, it actually helps you to empty your mind when you have too many thoughts going around and when you have too many doubts going around. So just, like, put a full stop to those doubts in your head and have a clearer thought when you are preparing. Then I used to go out with my mom. This was one of the small habits which I do cherish also. Then reading newspaper, as I told you, I used to read the newspaper daily before going to the class, and I did keep it as a habit afterwards also, reading PIB. Now, one of, like, the next habit which I'm telling you is recalling the things out. Now, generally what happens, there comes like, you feel a stagnating point. When you are starting with a source, you feel happy. You read about it. It will go for 2-3 days or for a week. Then you'll just leave it off, and then you won't be picking it up for a month or so. Now, what I used to do, I used to get a pen and paper, like, at the end of the day, and then just write, like, the way you write a journal. Journal mein, you empty your mind out. In On those pen and paper, I used to empty whatever I've read throughout the day out. And that actually helps me to recall the things which were there and whatever I've read. And then, like, I used to repeat that after a week also. Now, after a week, what I used to take up, now it's difficult to remember whatever I've done for a month. So what I used to do, I used to take up India's map, draw it off, and then on that map, I used to pick up like, whatever has happened in Madhya Pradesh. So for a week, for this particular week, what is there in news related to Madhya Pradesh? Then whatever I'm able to recall, I used to write it down.
than in UP, whatever there was in news. In Bihar, what was in news. In Haryana, what was in news. And that used to actually give me a good understanding and good amount of content from whatever I've read. And then pro center, like what was in news related to MEA, what was in news related to MOTS, related to MOA, what all projects were there. And in this way, I just used to run my head up. Now, this actually helps because you are recalling the things off and you are just writing them off on a piece of pen and paper. You can repeat the same exercise after a month, and then you have a good amount of content. And then I used to clear that content off on a page of like using my notes. Again, mapping those things out. So I used to have a map pasted in front of like on my front wall in my room, and then I used to just like whenever I'm just like not feeling like all of you may have had listened before also. Now the main part which I'm looking forward to this talk is your doubts, what all doubts you have, and these doubts would also help me identify the kind of like the audience that is there. So can we just move to the doubt session now, Palak? Can we start with the doubts? You may raise your hands. Yeah, Deepak. Yes, ma'am. Just a second. मैं आदित्य हमारे सदस्य की ओर से यूपीएससी से संबंधित कुछ कुछ शंकाओं को समाधान करने की मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। जी मैम आज के समय में कॉलेज की जो सोसाइटियाँ और जो इंटर्नशिप है एक छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन साथ ही छात्रों को यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। तो कॉलेज की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे संतुलित किया जाए? जी आदित्य, आप कौन सी ईयर में हैं अभी आदित्य? सेकेंड ईयर मैम। क्या कोर्स है आपका? हिंदी ऑनर्स है मैम। हिंदी ऑनर्स है। हम 2-3 डाउट्स ले लेते हैं इकट्ठे एंड देन आई विल आंसर इट। एक और मतलब 2-3 लोग और डाउट पूछ लीजिए। मैम नेक्स्ट डाउट है मैम, लोग अक्सर बैकअप प्लान लेकर चलते हैं। क्या आपको लगता है कि एक प्लान बी रखना आवश्यक है या नहीं? इस पर आपका क्या विचार है? जी आदित्य। जी मैम। ओके मैम नेक्स्ट और जी पूछिए आदित्य, बताइए। मैम नेक्स्ट है एनसीईआरटी पढ़ते समय नोट्स बनाने के लिए कुछ सुझाव क्या होंगे जो आप देना चाहेंगे? ठीक है, ओके। सो फर्स्ट जो आपने मुझसे डाउट पूछा आदित्य, तो ये इन जनरल डाउट है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपके पास जो पहले बच्चों से आएंगे वो डाउट्स आपने मुझसे पूछे हैं। तो जैसे कॉलेज में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं सोसाइटी और इंटर्नशिप की, और उसके साथ साथ अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो इन जनरल अगर मैं अपना केस बताऊं तो आई डेंट टेक अप, मतलब एक टाइम के बाद आई डिसाइडेड कि आई वोंट बी गोइंग फॉर एनी सोसाइटी और आई वोंट बी टेकिंग अप इंटर्नशिप्स और आई डेंट इवन सिट फॉर प्लेसमेंट्स। But from my side, like that, I decided in my third year. Before my third year, in my second year, I was quite active. I stood for ICT elections. I was part of some other committee. And if you don't do that and you get into UPSC preparation, जिस काम के लिए आपका कॉलेज होता है और जिस काम के लिए आप कॉलेज में एंटर करते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉलेज में स्टडीज के साथ साथ यू एंटर इन टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, and that personality along with the whatever you are learning in your college, that develops from societies, that develops from internships, and that develops from various projects which you take up. So if you have opportunity to take up those projects, take up those opportunities, take up those internships, I better advise कि वो सब लेना चाहिए. You should participate in that, and one should participate in that. But like if you are planning to appear next year, so you can stop it in your third year or in the mid of your third year if it's getting too hectic for you. Then the same thing I'd advise for placements as well. Like for placement, it's up to you whether you want to take up that job or not. But when you are sitting for a placement, that will help you improve your personality. That will be a mock interview or a micro interview which you'd be appearing for. So why not sit for placements? It's better to sit for placements in that sense. So that's I guess that answers your first question. Now the second question, whether we need to have a backup plan or not. Now that's the question about plan B. Now I had my doubts when I didn't keep a backup plan and I couldn't qualify my first attempt after an interview. That why didn't I have a backup plan over the same? So in that sense, it's good to have a backup plan because it provides you with the security and safety, and it actually allows you to get back to something if you are not clearing UPSC, because this exam is as much as uncertain as anything can be. Like so, it's advisable to have a backup plan, and if like better not go my way the way I went. So and the third question, as you were saying, NCERT के नोट्स और सुझाव। तो एनसीईआरटी के नोट्स और सुझाव पे मैं ये कहना चाहूंगी कि सब एनसीईआरटी पढ़नी जैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक मुझे सही नहीं लगता।
क्योंकि एनसीईआरटी की बहुत सारी बातें हैं जिनको, जैसे मैंने बताया कि जो बुक्स हैं, जो यूपीएससी की आप बुक लिस्ट बनाओगे, उसमें कुछ बुक्स ऐसी रहेंगी जो एक तरीके से नोट्स ही रहेंगी। अब वो जो नोट्स जो उन्होंने बनाए होते हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही उठा के बनाए होते हैं। तो आप पहले उस चीज की एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर आप उसके नोट्स पढ़ रहे हो, यू आर डुप्लीकेटिंग योर एफर्ट। तो अगर आपको वो नोट्स एक बार में समझ आ रहे हैं और आपको उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, तो यू स्टिक विद दोज नोट्स ओनली। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बिल्कुल भी उस चीज की बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप उसके लिए एनसीईआरटी को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। एनसीईआरटी फिर भी मैं कहीं भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप छठी कक्षा से शुरू करिए, हो सके तो आप नवीं से ही उसे शुरू करिए। उसके साथ साथ अब एनसीईआरटी के नोट्स बनाने से रिलेटेड, आई डोंट एडवाइस टू मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी अनलेस एंड अनटिल एनसीईआरटी ही आपका मेन सोर्स है। एनसीईआरटी आपका मेन सोर्स यूजुअली ज्योग्राफी के सेंस में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सिचुएशन बताऊं तो मेरे लिए ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी थी और एक आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी थी, वो मेरी मेन सोर्स थी। मतलब उसके अलावा मैंने उनमें उनके लिए कोई अलग से बुक को रेफर नहीं किया था। तो मैंने फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास 11 की बुक थी, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए थे। बट मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दोबारा पढ़ा था, जिसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। और एक बार मैंने जो पॉलिटिकल थ्योरी जो क्लास 11th की होती है, उसे पढ़ने की कोशिश करी थी, जिसके नोट्स नहीं बनाए थे। बकायदा मुझे बनाने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी कर रही थी। तो इस तरीके से आई डोंट एडवाइस इट कि आप जो चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी उसी लिए होती हैं, उनके आप नोट्स बनाए। आप नोट्स जब अपने मेन बुक्स पढ़ेंगे तो उनको आप सिंप्लीफाई करने के लिए उनके नोट्स बनाइए। या फिर अगर आपकी एनसीईआरटी आपका मेन सोर्स बनती है, तो आप उसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम, अ, मैं सबके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछूंगा जो मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए हैं। जी जी, अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकें जी। आदित्य, दैट वुड बी बेटर, आई बी एबल टू इंटरेक्ट विद देम आल्सो। आई थिंक काफी बच्चों ने हाथ भी रेज किए हुए हैं, दीपक, शुभम, मुस्कान, श्रव्या। यस मैम। अगर हो सके तो फिर उसके बाद आप एक बार पूछ लीजिएगा, लाइक वी कैन Excuse me, ma'am. shuffle between. Yes. Ma'am, we are allowing the participants to send you doubts through chat. Can we do Okay, so? we can do so also. Participants, can't they talk to me? Like, that would be better also. Okay, ma'am. Then please wait. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह सवाल विज्ञान और वाणिज्य पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की ओर से है। यूपीएससी की जी तैयारी जी। में आप यूपीएससी की तैयारी में आपके स्नातक विषय में कितना महत्व है? क्या क्या यह वास्तव में मददगार होता है, और हमें इसे वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहिए या उस विषय को लेना चाहिए जो मुख्य धारा में है और चयनित होने के अधिक मौके हैं? ठीक है, तो जैसे मैंने ऑप्शनल के बारे में बताया कि ऑप्शनल को डिसाइड करने में काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं। क्योंकि आपका जो ऑप्शनल होता है, वो आप उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल की अंडरस्टैंडिंग उसमें आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड होती है। और यू हैव टू मेक द एग्जामिनर फील कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, यूजिंग ऑल द टर्म्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द बुक्स व्हिच अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव रेड, वो सब नॉलेज के साथ आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने जिस अपने सब्जेक्ट में स्नातक की है, आप उसी को अपना ऑप्शनल लें। अमूमन ऐसा होता है कि ज्यादातर, आई गेस 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिन जो अपने ग्रेजुएशन लेवल से अलग ऑप्शनल चूज करते हैं। तो और दे आर एबल टू स्कोर वेल इन दी ऑप्शनल एज वेल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, लेकिन लिटरेचर के स्टूडेंट्स को मैं जरूर ये एडवाइस करूँ, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को मैं जरूर ऐसा एडवाइस करूंगी कि जो उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, एंड इफ दे हैव इंटरेस्ट इन द सेम व्हिच वी डू टेंड टू लूज आफ्टर 2-3 years, एंड इफ दे लाइक रिटेन द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि उसी सब्जेक्ट को आप अपने ऑप्शन के तौर पे लो। क्योंकि उसकी जो बुक्स हैं, उसमें जो आपने पढ़ा है, उसमें जो चीजें हैं, उनमें से काफी सारी चीजें जो है, काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है, वो इंटरनलाइज हो जाते हैं, विच यू आर एबल टू प्रेजेंट इन द पेपर इवन इफ यू डोंट वांट टू, एंड दैट गेट्स ऑन द आंसर शीट, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स वेल एज वेल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ही लेना है, आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू टेक अप। बट फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स इट इज एडवाइजेबल टू टेक अप योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। Ma'am, now one by Excuse me, one, ma'am. everyone will ask question from you who have raised their श्योर hand. कलर, या। सो शैल आई कॉल अप द नेम्स और they'll be introducing Yes, ma'am. themselves? Please call up the names. And I Yeah, request all the participants to please maintain the discipline and decorum and ask questions as ma'am call out your name. yeah. You're advised to switch on your video as well as to turn on your mic as I call your name. So Deepak Kumar, you may ask your doubt, please. हेलो मैम। Switch on your video also if you are comfortable. वीडियो ऑन करना पड़ेगा मैम?
हाँ मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं, नथिंग कंपल्सिव फ्रॉम दैट सेंस, या यू मे आस्क योर डाउट। मैम मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं फिजिकल साइंस जी विद केमिस्ट्री का छात्र हूँ, जी जी फर्स्ट ईयर में। जी बताइए। थैंक यू मैम कि आपने मेरा नाम पहले लिया। नहीं, आपका नाम शो हो रहा था तो दीपक इसलिए आज। यस यस मैम। प्लीज आस्क योर डाउट, या। मैम मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ और आईएफएस या मतलब फॉरेन सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। जी दीपक। पर मैम जैसा कि सभी कहते हैं और मतलब वैसे भी स्टैटिक्स से हमें पता लगता है कि यूपीएससी की जो जर्नी है वो थोड़ी लंबी है हम्म। और इसमें मैम सक्सेस रेट तो थोड़ा कम ही है। तो मैम पहले क्या हमें एसएससी सीजीएल देना चाहिए एज अ प्लान बी, क्योंकि ऐसा उसमें भी प्लान। एमबीए की जो पोस्ट है उसमें से भी हम आईएफएस बन सकते हैं अगर मतलब वहाँ पे रह के फिर बाद में अगर यूपीएससी का एग्जाम दे तो। ठीक है दीपक, मैं अभी आपके डाउट को मैंने लिख लिया है। यस मैं मैम। 3 डाउट लेके आई आंसर इट। यस या मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, शुभम कुमार राणा। नमस्ते मैम। नमस्कार शुभम। मैम मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सेकंड ईयर, किरोड़ीमल जी कॉलेज से। शुभम बताइए। मैम बेसिकली मैम मेरा एक डाउट है जो मुझे परेशान कर रहा है। मुझे पता चला हाँ कि जी आपका भी ऑप्शनल पीएसआईआर है, तो मैंने सोचा आपसे पूछता हूँ। मैम जी जी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने ग्रेजुएशन जो है पॉलिटिकल हम्म साइंस उस पर फोकस ना करके मैं पूरा टाइम पूरे डेडिकेशन के साथ पीएसआईआर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का हम्म प्रयास करूँ। तो मैम क्या हम्म। ये मेरा ये स्ट्रेटेजी सही रहेगा, ग्रेजुएशन पे फोकस ना करे, पूरा टाइम मैं पीएसआईआर पे डेडिकेट करूँ? थैंक यू I मैम। have written your doubt, Shubham. I'll answer it. Yeah. I have a personal experience of the thing. Yeah. So, Muskan, am I audible, Muskan? Yeah. Yes, ma'am. Hello, good evening, ma'am, and thank you to the Think Circle to organize this. I'm a student from Gagi, and I have a combination of English and philosophy. I'm doing a BA program, and I'm a first year student. So I have a basic question: Yes. that what are the three, I would say, the three habits or something, three main efforts that you put, which Mm-hmm. help you to hit the bullseye, and you were able to clear it itself in the second attempt? Bullseye. Okay. Anything else? Yeah. So, next, Shravya. Shravya Divedi. Hello, am I audible, Hi. ma'am? Yes, Shravya, you are. Good evening, ma'am. Good evening. Uh, Actually, I'm a first year student of history honors, currently pursuing it Mm-hmm. from DRC. I just wanted Okay, to Shravya. ask that, I'm getting a lot of confusions regarding whether should I focus more on my graduation right now, so that I can actually pursue history as my optional during my UPSC, or should I Mm-hmm. just, get into the GS part and read a lot of stuff related only to UPSC? I'm just not sure. Yes, Shravya. Okay, so I'll answer these doubts first. So, ज़्यादातर जो हैं students, they are in their first year and second year. तो पहली चीज, अभी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में व्हाट आई एम एडवाइजिंग, एंड आई एम एडवाइजिंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, यू हैव अ चॉइस टू लिसन टू मी और नॉट, बट इट्स एडवाइजेबल कि अभी एकदम से मतलब आप कंप्लीटली अपने ग्रेजुएशन को छोड़ के यूपीएससी में मत कूदिए। दैट्स नॉट बेनिफिशियल इन द सेंस, बिकॉज आपने ग्रेजुएशन लिया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो किसी कारण से लिया है, एंड इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल, योर ग्रेजुएशन वुड हेल्प यू। एंड दूसरी चीज ये है कि पहले 2 साल तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने मतलब जो आपका कॉलेज है वो आपकी पर्सनालिटी आपकी डेवलप कर रहा होगा, और अगर आप अभी से हटके उसमें लग जाते हैं तो क्या होगा यूजली कि जिस तरीके से आपकी कॉलेज को आपकी पर्सनालिटी डेवलप करनी थी वो नहीं कर पाएगा, और आप जो कोचिंग इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स निकल के आते हैं कोटा से बाहर, उनसे अलग या मतलब वैसे ही बन जाएंगे। सो डजंट मेक एनी सेंस, बेटर मेक यूज ऑफ योर कॉलेज ना, इफ यू आर पेइंग फॉर। सो फर्स्ट या सेकंड ईयर तक मैं नहीं एडवाइस करूंगी, थर्ड ईयर में आप धीरे धीरे इसमें जा सकते हैं। उसके बाद प्लान बी की, जैसे दीपक आपका जो डाउट था कि आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के और आप आईएफएस करना चाहते हैं, फिजिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस जो भी आपने मुझे बोला, आईएफएस आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मतलब आप एसएससी सीजीएल का भी सोच रहे हैं, यू कैन कीप दैट एज एन ऑप्शन, नो डाउट, एंड प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। बट अगर आप यूपीएससी में जाना चाहेंगे तो दैट वुड रिक्वायर योर कंप्लीट डेडिकेशन। तो आप एसएससी में जाके और फिर यूपीएससी में जाना, that's going to be a difficult bit, and that's going to be a difficult thing to move in as well. साथ ही साथ एमईए में जरूर प्रमोट होके आप आईएफएस तक पहुंच जाते हैं, बट वो जो आईएफएस का गैप है
between the promoting officers and the RR officer थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो जिस तरीके से एक RR ऑफिसर को MEV में ट्रेन किया जाता है ना। शुभम, आपका जो डाउट था कि आप ग्रेजुएशन छोड़ के और कंप्लीटली PSIR करने लग जाए, तो ग्रेजुएशन में अभी आपके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके पास आई थिंक पॉलिटिकल थॉट आना शुरू हो गया होगा, या वो थर्ड ईयर में आएगा। अभी आपके पास पब्लिक पॉलिसी आना शुरू हो गया होगा, पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आना शुरू हो गया होगा, ग्लोबल पॉलिसी आ रहा होगा। ये जो सब सब्जेक्ट्स हैं दे एक्चुअली हेल्प यू इन PSIR। तो आप PSIR में प्रॉपरली लग जाएंगे और आप इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, तो इन सब्जेक्ट से जो नॉलेज आपकी आएगी विच यू कैन पुट इन PSIR, वो आप नहीं कर पाएंगे। और PSIR में तो सबने, जो इंजीनियरिंग वाले ने शुभ्रा मैम के नोट्स पढ़ लिए या whatever material is available in the market, you will be similar to that person only। आपकी ग्रेजुएशन का तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। इट्स बेटर कि आप जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उस पर अभी के लिए फोकस करें। एंड इवन इन थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। IPT आता है आपके पास, WPT आता है, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी आता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आता है, डिलेमास इन पॉलिटिक्स आता है, feminist political philosophy, and all those things are there, which actually provide you with n number of ideas which you are going to inherit, even if you don't remember them, to put in your paper। So that would help you in that sense। तो इसलिए मैंने जो अपना शेड्यूल बनाया था वो इस तरीके से बनाया था कि मैं अपनी क्लासेस को मिस नहीं कर रही हूँ, बट उसके बाद का जो बीच का टाइम है या बाद का टाइम है, आई एम एबल टू पुट इट इन UPSC। So you do in that manner। Now, Muskan, what was your doubt? 3 habits. I would say just one habit, being dedicated. And then, like, if you want me to make you count 3 habits, then the second one is to read your newspaper, because you are going to get a lot of content. And the third one is to stick with the syllabus, and then stick with your book list, like sticking with the things you have, and then just recalling the things off, like बार बार चीजों को revise करते रहो। Revision is the most difficult bit which you feel like, but revision is the most important thing also, which everyone needs to do। So as to just मतलब coherent हो जाए जो भी चीजें हैं, logic से हो जाए जो भी चीजें हैं। श्रव्या, what was your doubt was कि आप graduation पे focus करें या GS पे focus करें? तो I think I've cleared your doubt from my side कि अभी I advise you to focus on graduation, which is आपका first year ही है। एंड फोकसिंग ऑन योर ग्रेजुएशन वुड एक्चुअली हेल्प यू, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी जो आप अपने ऑप्शनल में यूज करेंगे, और साथ ही साथ आपकी करंट अफेयर्स, योर थिंग्स अराउंड यू, मतलब एज अ पर्सन यू वुड बी डेवलपिंग। बट जैसे जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, इफ दे कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, इवन दैट कैन बी अ डिफिकल्ट बिट टू से, start reading the newspaper, get in touch with current affairs, get in touch with the things around them, that helps। And that helps one to just catch up when they completely dedicate oneself to UPSC's preparation। Yeah. Can we have few more doubts, please? Okay, I'll call up the names. Sakshi. Yes. I'm Sakshi, and I'm a first year political science student from LSR. Hi, And Sakshi. I wanted to ask you, I Yeah. seen that you're a senior, and I wanted to ask you that there's a lot of time crunch going on. I can't manage like all my classes and doing newspapers and readings and all that. So, can you give some advice to help with that? And Focus on your classes, because in LSI you can't do anything else. yes, Reena ma'am, ma'am, it's the Sunil main ma'am, thing. they Reena need ma'am is time. taking my UPT this year, and she's giving so many readings. I was just doing one liberalism reading of hers. Do you have Snail ma'am also teaching you? No, not right now, luckily. I Okay. don't have Why Reena it's ma'am and luckily? Snail ma'am at the same time, because I've heard some things from my seniors. We had both of them together in our first year, so Okay. better focus on that, I guess. Because that Yeah. will help you focus on political theory के concepts which Reena ma'am is Hmm. teaching you. They help in your life also and in UPSC also. I won't advise you, and if you get a chance to get into societies and everything, do some internships. I think some internships are available, or some projects are available which you can catch up in Okay. language studies and all, which we had during our time. So you can do that, and that would help you। Third year And से शुरू करना। also, I don't advise uh, you to do it after that, before that। okay. And also, I wanted to ask you, are there some books, like some authors that I can read right now? Because for CNI and all, we are being suggested read Bipin Chandra or Subhash Kashyap and all that. So, are there some more authors that I can do, and which of them would be the best? Like Constitution के लिए हमें सर ने बोला है सुभाष कश्यप या दुर्गादास बसु, या फिर मे बी जो यूपीएससी के लिए बुक्स यूज होती हैं उनमें से कोई भी पढ़ लो, तो कौन सी पढ़ूं, किस ऑथर I की think बेस्ट होगी? UPSC वाली books तो लक्ष्मीकांत की है, which I did हम्म stick with. So I don't advise you to do that. If you want to, you can take it up.
बट डीडी बसु या सुभाष कश्यप में से किसी के साथ भी जा सकते हो. सुभाष कश्यप अगेन थोड़ी सी लक्ष्मीकांत टाइप में चली जाती है. डीडी बसु इज मच मोर like it's more novelistic to read. So if possible, you can go with DD Basu if you want to go for your first year thing. Otherwise, if you want to go for UPSC thing, kind of an adventure, then you can go for Lakshmikant only. Thank you, ma'am. Yeah. And Okay. also, I had another question. Yes, There is Sakshi. a problem of attention span with me, which I've realized because I've been quite addicted with my phone since the last CUET and college gap. Mm-hmm. So it's taking a toll on me because I realize that बहुत time जा रहा है, but then I'm addicted to it. So how can I wear that addiction off? So what did I do? And it's for everyone. Like when I started preparing in my third year, so everyone gets addicted to their phone, Insta, Facebook, everything, and then just scrolling over YouTube, watching some stuff. So what I did, I got that वो dialer वाला जो phone होता है, जो छोटा phone होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता. So I used to switch off my like जो smartphone होता है, keep it in my almirah. Then to one of my friend I had given my जो dialer वाले phone का number है, और एनल क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं. And then if anything important was there, she used to call me up on that number. Otherwise, I was free to study and whatever I wanted to do in my life. That provides you with peace, and at times peace is necessary. Thank you so much, ma'am. Yeah. So next question, Shubham Kumar. Thank you, ma'am, for this opportunity. I have a Yes. question on how to stay disciplined and as well as consistent. Yeah. मतलब दोनों नहीं हो पाता एक साथ. अगर कंसिस्टेंट रहता है तो डिसिप्लिन नहीं रह पाता है. कभी 1 घंटा पढ़े तो कभी 2 घंटा, कभी एक. जैसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट दोनों रहना चाहते हैं. I think discipline and consistency go hand in hand. और आई थिंक कंसिस्टेंट ये नहीं है कि आप अब आपको कई बार ऐसा होता है कि अमूमन हमें ये लगता है कि कंसिस्टेंसी वो है कि मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ ली, एंड दैट इज नॉट डिसिप्लिन, इफ टू से. बट दैट डजंट वर्क इन लॉन्ग रन. तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वही है जो, इफ यू आर एबल टू मेक अ रूटीन कि हर दिन मैं कुछ समय निकाल रही हूँ अपने काम के लिए, हर दिन मैं समय निकाल रही हूँ न्यूज़पेपर के लिए, हर दिन मैं समय निकाल रही हूँ चीजों को रिकॉल करने के लिए. तो डिसिप्लिन आई थिंक कम्स फर्स्ट, and then consistency comes with dedication and determination, which is going to put you again in the matrix of discipline. So better have a schedule, and if possible, like all of us are going to, like nobody follows the schedule, and it's like to err is human, and you would be erring your way out. But if you are able to put yourself and keep yourself disciplined even for 4 days in a week, that works, because that puts you into consistency. Because if you are disciplined, you will be getting 7 hours out each day. In a week, at least you have got 28 hours of study, which you have done, and you have completed, because you were disciplined, you were consistent, you have completed certain part of your book list using those 28 hours, and that helps in that manner. I hope I answer your doubts, Shubham, or you had some other doubt in this. Okay, we'll move to the next thing. Somebody has the name IAS with a name. Yeah, please. नमस्ते You मैम. may introduce yourself first. नमस्ते मैम, मेरा नाम जयशंकर है. मैं हाँ ये जी. तीसरा वर्ष है मेरा, अर्थशास्त्र विषय से ऑनर्स मेरा है. हाँ जी. और मैम आईएएस नाम लिखने का ही है क्योंकि आपको देखा तो पहले यही नाम याद आया कि आज एक आईएएस से मिलने जा रहे हैं, तो आईएएस देना अच्छा नाम है जी. और मैम प्रश्न ये है कि हम अभी थर्ड ईयर में हैं, तो हमारे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में कई सारी सोसाइटी, कई सारे कल्चरल, कई सारे इंटर्नशिप और कई सारी चीजें जो परफॉर्म एक होती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनमें इंगेज हो अच्छा लगता है. और तो उसके साथ मैम समय बहुत कम बचता है. फिर एक कैसे उसको मैनेज करें मैम, क्योंकि इधर इकोनॉमिक ऑनर्स सब्जेक्ट है तो उसके लिए कंटिन्यूअस पढ़ाई भी करते रहना है, उसको भी देखना है. और उसको ऐसा तो है नहीं कि थ्योरी सिर्फ पढ़ करके हम जाके एग्जाम दे दिए और सेमेस्टर एग्जाम निकल जाएगा, तो बैक का उसका डर रहता है. फिर दूसरा प्रश्न ये है मैम कि अगर हम प्लान बी की बात करते हैं, तो प्लान बी में मैम हमारा इकोनॉमिक ऑनर्स है, तो प्लान बी में मैम एमए के लिए उसकी तैयारी करना है, तो थर्ड ईयर वो भी समय होता है कि जहाँ एमए के एंट्रेंस के लिए एग्जाम तैयारी करना होता है. तो क्या मैम उसको स्किप कर दें, उसको रेस्ट ऑफ पीस छोड़ दें और अपनी इधर यूपीएससी के लिए पूरा फोकस करें? आई डोंट थिंक सो रेस्ट ऑफ पीस छोड़ दो. देखो, जैसे मैंने बोला आपको, जयशंकर अंदर, कि आपको अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी होंगी, और एक स्टेबल आगे की लाइफ इज ऑल्सो वन प्रायोरिटी एज वेल. और एमए अगर आपको उसके लिए इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप एमए की तैयारी भी साथ साथ रखिए. तो अब आप एमए की तैयारी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप यूपीएससी की चीजें भी देख रहे हैं, तो शायद आप कॉलेज में जो ये एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें समय अपना कम कर सकते हैं. तो इस हिसाब से चीजों को बैलेंस करिए.
कि आप अपना टाइम उस ब्रैकेट में रख रहे हैं कि हाँ मैं एमए को इतना टाइम दे रहा हूँ, एमए और यूपीएससी में चीजें इतनी ओवरलैप कर रही हैं, इस हिसाब से मैं इनमें जो ओवरलैपिंग पोर्शन है इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद जब मेरी एमए का जो एग्जाम होगा वो हो जाएगा, जब बाकी बचा हुआ जो यूपीएससी वाला पोर्शन है मैं इस हिसाब से कर लूंगा। मैं न्यूज़पेपर डेली कर रहा हूँ, और कॉलेज के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनमें मेरा होना आवश्यक है उनमें मैं जा रहा हूँ, जिनमें आवश्यक नहीं है उनमें मैं नहीं जा रहा हूँ। So I hope that answers your question. Next, we move to Piyush. Hello. Yes, Piyush. Yes, ma'am. I am Piyush, ma'am. I am currently pursuing B Honors Pol Science from Aryabhatta College. Yes, Piyush. मैम Which मेरा year? एक डाउट है कि आप भी जब कॉलेज में आए होगे तो आपके सामने भी चैलेंज होगा कि सोशल स्किल्स, सोशलाइज करना, Mm-hmm. ये सब कैसे करें, Mm-hmm. इंटरेक्ट कैसे करें, Mm-hmm. तो ये मुझसे नहीं हो पाता, तो इसके लिए कुछ गाइडेंस कर सके तो। Let yourself free, you'll find your friends off. ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर हो सके तो try opening up, try interacting with students. And it's good to interact because peer group learning होती है, और when you are interacting with people around you, that helps you with the same as well. पर अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो मैं आपको प्रॉपरली एडवाइस करूंगी कि डू मेक गुड फ्रेंड्स and like try spending time with them, try being with them, try going out with them. That helps. Uh, Anything else, Piyush? Okay, now I'll take 4 questions in a go and then I'll answer that. Aman, Priyambika, Devprabha, and Soman. So firstly, Aman, you ask your doubt. Hello, ma'am. I'm Priyambika. I'm in my second year. I'm pursuing BSc Physics Honors. Glad to meet you, ma'am. My doubt is, what is the mistake which you would suggest us to avoid in this journey of UPSC? Changing your sources again and again. Don't change the sources. Every source is as same as it can be. So stick with whatever you have started with and rely on it. Like don't have like this exam is uncertain. So each one of us is going to have a lot of doubts that this is working, this is not working, this is somebody is saying. And then the second thing, don't heed to others. Others are not to be heeded over too. And it's something that you have decoded yourself. So just believe in yourself and then believe in the book list which you have prepared. Don't like change your ways out too much. That actually like increases the time. Okay. Then the next person was, okay, I'm not able to see. Anamika Gujit. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, I am Anamika. a first year student from Miranda House, and I want to Uh-huh. ask you that UPSC is a long journey. So, how to keep motivated and consistent to ourselves? Because consistency is a like major problem in our academics too. So, please guide me for this. Okay, Anamika. Next is Shrishtika Garg. Hello, good evening, ma'am. Yes, Shrishtika. मैम आई एम फ्रॉम कैथल हरियाणा, आपके पड़ोस से ही हूँ मैम, मैं पटेल नगर से। आप मॉडल टाउन से है ना? जी श्रुष्टिका बताइए। मैम आई क्लियर्ड माय 10th इन एज ऑफ 9 ओनली एंड आई गॉट ग्रेजुएटेड इन एज ऑफ 15। सो अभी 17 की एज में मेरा पीजी हो गया था इंग्लिश लिटरेचर में। देन आई थॉट कि हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए बिकॉज एम तो यूपीएससी ही था। तो मैम मैंने How many एमए classes did you skip, Shrishtika? आई डिडंट स्किप एनी क्लास मैम, आई did syllabus of 2 classes at one time, like I did 7th and 8th Okay. in 1 year। हाँ जी, Fabulous तो to मैम hear. मैंने एमए इंग्लिश किया है और एमए हिस्ट्री किया है। अभी आई एम ऑफ Okay. 19 और हाँ जी, तो मैंने सोचा था कि 1 जनवरी से आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। Mm-hmm. एंड अभी मैम एक तो डाउट ये है कि कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और बिकॉज मेरा Mm-hmm. बैकग्राउंड मैम आर्ट्स ही रहा है और ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़ा है। Mm-hmm. हाँ जी, तो एक डाउट तो ये है मैम Mm-hmm. कि अभी कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। Mm-hmm. और मैम दूसरा डाउट ये है कि मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि लाइक हमें टाइम टेबल को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि पहले पॉलिटिकल ले लिया, उसको खत्म किया, देन हिस्ट्री शुरू किया, या फिर डेली 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ा, 1 घंटा पॉलिटिकल Mm-hmm. पढ़ा, ऐसे मैम। हाँ ठीक जी। है, ठीक है Shrishtika. Very nice of you. Yeah. Vrisha Pandey. Vrisha Yes, Pandey. ma'am. Am I audible? Yes, Hello, ma'am. Vrisha.
मैम आई एम इन फर्स्ट ईयर परसुइंग हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम बीआरसी Yes, बट मैम Rishi. मैंने सून ये रियलाइज किया कि आई डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। मैम मेरे को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट इकोनॉमिक्स क्योंकि 12th में मैथ्स नहीं थी। ठीक है। तो मैम मैं अभी ऑप्शन अपना इकोनॉमिक्स लेके चलूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स। पीजी लेवल या यूजी लेवल तक आनी चाहिए और इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री। तो मैं मतलब ऑप्शन हिस्ट्री को ही कोशिश करूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ। तो मैं ट्राई करूँ उसको समझने की या फिर मैं अपना इंटरेस्ट की तरफ जाऊँ इकोनॉमिक्स। आपका जी क्या है ऋषा? जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया होगा ना अपने साथ में, इफ दैट इज देयर नाउ। एम आई ऑडिबल ऋषा? यस मैम मैम इकोनॉमिक्स ही है जी। जी इकोनॉमिक्स ही है ना, यू कैन इजीली गो विद यस दैट। मैम। ओके मैम बट उसमें तो माइनर डिग्री ही मिलेगी। या आई गॉट योर पॉइंट, आई विल आंसर दैट आउट। ओके ओके अधीरा गुप्ता। Hello, ma'am. Am I audible? यस अधीरा बोलिए। Yes, ma'am. It's an honor to talk to you. So my बहुत question good. is, I am currently pursuing BA honors with political science as my major and history as my minor. So I actually wanted to go for pol science honors and but I couldn't get it. So जैसे कि सब लोग कहते हैं, everyone says that start like कि pol science honors, if you do it in graduation, it will help you in your optional subject. So I was and BA program में the pol science is not as smooth, मतलब ऐसे smoothly नहीं पढ़ाया जाता एकदम। It's like काफी breaking है, मतलब एकदम flow में नहीं जाता है। तो I was thinking I will appear for CVT again next year and I will score well. I know that, so I can pursue pol science honors in that. So I wanted to ask like BA program के बच्चों के लिए scope होती है, मतलब optional में वो अगर ले science, PSI या pol science. So because एक year का पूरा वो है, like I can dedicate that 1 year later on, like graduation इसी से कर लूँ मैं, फिर 3 years बाद I can take on to that. So I just wanted an advice, like what do you think will be right? And second question is, like that I've written. Second, like what Your exactly voice is did you breaking. do Yeah. in your third year? Like everyone says, okay, what exactly did you do in the third year? Because everyone says कि start preparing in your third year, start preparing in your third year, but no one tells कि how should we start? ना तो पता है कि newspaper पढ़ना है, वो I'm like starting in the first year itself. So I will make the consistency like till the third year, but newspaper की accept what we are supposed to do in the third year to start Sure. proficiently. I Sure. wanted to ask you. Thank you, ma'am. ओके ओके अनामिका, मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट कैसे रहे, अनामिका का डाउट है। तो मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट को मैं थर्ड ईयर वाली चीज से ही लिंक करूंगी एंड देन आई आंसर इट। सृष्टिका, आपने बहुत कुछ कर लिया है सृष्टिका। मैं यूपीएससी वाली चीज अगेन आई विल क्लब इट विद थर्ड ईयर वाला चीज की कि किस तरीके से आप चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, देन यू कैन प्रिपेयर। वो मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगी कि मैंने उसके बाद कैसे प्रिपेयर किया था आफ्टर माई थर्ड ईयर, आंसरिंग योर डाउट। वृषा का डाउट है, वृषा आई सर्टेनली एडवाइज यू नॉट टू बी सीयूटी अगेन। इट्स नॉट गुड टू वेस्ट वन मोर ईयर ऑफ योर लाइफ। एंड अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पीएसआईआर लेके दोबारा पीएसआईआर में 312 320 नंबर लेके आ सकता है, तो पॉल साइंस की ग्रेजुएशन इज नॉट द मास्टर मंत्रा टू स्कोर पीएसआईआर में अच्छे नंबर। दैट इज नॉट एट ऑल required to waste one देते हैं ना पॉल साइंस में, मतलब एक ऑनर्स करके भी in my first attempt I could score 220 in pol science and could fail in my home only. So that's not at all required. Now I'll start with what exactly so yeah okay so Adhira, that was your doubt I guess. And Risha का जो डाउट था वो ये था कि उनके पास हिस्ट्री है और ऑप्शनल उनका इकोनॉमिक्स है, तो वो इकोनॉमिक ऑनर्स लेना चाहते हैं। तो वृषा, अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी के लिए कि इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और इकोनॉमिक्स आपको अच्छा लग रहा है, और जैसे आपने जनरल इलेक्टिव इकोनॉमिक्स ले लिया है, तो माइनर में भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं विच डू हेल्प यू। फर्स्ट ईयर में आई गेस माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो आपने अपने 11th या 12th में पढ़ा हो उसकी रिवीजन होती है, और सेकंड थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर तक ही जीवी चलता है, सेकंड ईयर में थोड़े मेजर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। इसके साथ अगर आपको लगता है यू कैन कीप like start with some coaching for economics if you may feel like, because हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इट गेट्स डिफिकल्ट टू डेवलप इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज सच एज आई कैन थिंक ऑफ। और हिस्ट्री के लिए सोर्सेज भी इतने ज्यादा अच्छे अवेलेबल नहीं है, और हिस्ट्री डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट्स अ वास्ट ऑप्शनल इन इट्स ओन सेंस। सो इफ यू फील लाइक for economics is much more logical, much more social logic of resources in the market, you can go with economics for that part of it. Okay, I guess now I'll start with how I started preparing my third year. So in my third year, why third year if you say, because third year के बाद आप graduate हो रहे हो and then you have a year का gap, या फिर आप साथ ही अपेयर हो जाते हो। तो जैसे मैंने बोला कि 1.5 साल ही आपको चाहिए अगर आप पूरे तरीके से
प्रिपेयर कर रहे हो, तो थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू इट। ना थर्ड ईयर में आपको इंश्योर करना है कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना पहले से शुरू कर दिया है, नाउ यू डू इट फॉर द थिंकिंग कि हाँ अब मैं पूरे तरीके से लग गई हूँ यूपीएससी के प्रिपरेशन। So you do it properly, you do it consistently, you do it every morning before going to class. Now in third year, you ensure that you have a copy of syllabus with you and you have by-hearted that syllabus. Properly आपको याद है कि हाँ GS1 क्या होता है, GS2 क्या होता है, GS3 क्या होता है, ethics क्या होता है, SC क्या है। उसके बाद आपको पता है मेरा ऑप्शनल क्या होने वाला है। जरूरी नहीं है थर्ड ईयर के बाद नहीं कर सकते या जॉब के बाद नहीं कर सकते, बट अगर आप थर्ड ईयर में कर रहे हो तो आपको पता है कि मेरा ऑप्शनल क्या है और मैं किस ऑप्शनल को आगे लेके जिसको मैं ग्रेजुएशन के लेवल तक पढ़ने वाली हूँ, उस ऑप्शनल का सिलेबस क्या क्या है और मुझे उसमें कितना कितना पढ़ना है। ना दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। अब ये सब आपने कर लिया, इसमें आपने लगा दिए अपने 15-20 जितने भी दिन लगा दिए। मतलब आई गेस जुलाई में हमारा जो ईयर है वो शुरू होता है। इसके बाद यू गेट टू अ बुक लिस्ट, ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, इनमें मैंने टिक कर दिए कि इस चीज के लिए मैं ये पढ़ने वाली हूँ। देन आई डिसाइड अ टाइमलाइन, पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटी के लिए आई एम रीडिंग दिस, इसका ये चैप्टर मैं इस टाइम तक खत्म कर दूंगी। तो इस हिसाब से यू गेट इनटू योर प्रिपरेशन। GS2 के लिए मुझे लक्ष्मीकांत करनी है, आया के लिए मैं अपनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो मुझे कॉलेज में पढ़ाई गई है बस वही पढ़ने वाली हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने वाली हूँ और कुछ नहीं करने वाली। गवर्नेंस के लिए मैं बस न्यूज़पेपर पे ही रिलाई करने वाली हूँ या फिर इस पर्टिकुलर कोचिंग के थोड़े बहुत नोट्स मुझे देखने हैं। उसके बाद सोसाइटी के लिए आई विल बी वॉचिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई वोंट बी गोइंग फार फ्रॉम दैट। इकोनॉमी के लिए आई विल बी रेफरिंग टू जस्ट दिस वन बुक। अब उसके बाद आप प्रायोरिटाइज करते हो, जैसे आपने मुझे पूछा सृष्टिका कि पहले पॉलिटी करें, ज्योग्राफी करें, क्या करें। नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। आई जस्ट टेल यू व्हाट वर्क्स फॉर मी। तो मेरे लिए ये वर्क होता था कि आप रोजाना मतलब बोर हो जाते हो, आप पूरा दिन पॉलिटी नहीं कर सकते, पूरा टाइम ज्योग्राफी नहीं कर सकते, तो यू हैव योर टारगेट्स जिसमें आप मिक्स एंड मैच करते रहते हो। सो यू डिसाइड अ टारगेट कि मुझे पॉलिटी करनी है कंप्लीट बाय द एंड ऑफ September 30। मुझे ज्योग्राफी का ये पर्टिकुलर थिंग काउंट करना है, पॉलिटी का ये पर्टिकुलर, पूरी पॉलिटी नहीं। डोंट गो विद हेवियर टारगेट्स कि मैं पूरी लक्ष्मीकांत 2 दिन में कर दूंगी। ऐसे टारगेट्स नहीं डिसाइड करने हैं, डुएबल टारगेट करने हैं। कई बार ऐसा होता है 2 घंटे में आप 20 पेज पढ़ पाते हो, लेकिन 20 पेज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो वो आप कभी भूलोगे नहीं, यू आर रिकॉलिंग इट वेल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आपने हाँ मुझे 20-30 सितंबर तक पॉलिटी का ये पर्टिकुलर चीज कंप्लीट कर देनी है, ज्योग्राफी की ये चीज करनी है और इकोनॉमी की ये करनी है। ना आई बी शफलिंग अराउंड डेली का जो मेरा शेड्यूल होगा कि आज मेरा मन है पॉलिटी पढ़ने का तो आई रीड पॉलिटी, देन इन द इवनिंग इफ आई गेट टाइम आई डू ज्योग्राफी। नाउ इफ आई फील लाइक डूइंग ज्योग्राफी या फिर अगले दिन का जो शेड्यूल मैं बना रही हूँ उसमें आई कीप ज्योग्राफी इन इट, एंड इफ आई कैन कीप ज्योग्राफी अगेन आई डू ज्योग्राफी। अब मुझे ज्योग्राफी मैंने 3 बार पढ़ लिया, नाउ आई वोंट बी एबल टू डू ज्योग्राफी अगेन, आई पिक अप इकोनॉमिक्स, देन आई डू इकोनॉमी। It like you just need to trick your human mind in that sense so that it works for you. That's it. That's what I like to say. और कुछ अगर कुछ इनमें से आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट रह गया हो, और आई कॉल फर्दर। तो अनामिका, सृष्टिका, वृषा, आधिरा, त्रंबिका, आपके डाउट्स क्लियर है ना सबके? ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट पर्सन, देव प्रभा। Hello. Good evening, ma'am. यस देव प्रभा, बताइए। Ma'am, actually, I'm not able to understand whether I want to prepare for UPSC or not. Actually, ma'am, I will tell honest, ma'am, I'm the eldest daughter of my parents. So I think my parents forced me to do that. One day I was like, yeah, I want to prepare for UPSC, and another day I was like, no, I can't prepare. I want to do MBA. I want to do in fashion illustration. I have a lot of thoughts. Like, I'm not able to decide whether what I want to do. I'm in first year and pursuing BSc Physics honors from Maitri College. Ma'am, I have that doubt. Like, I'm not able to decide what I want to do. देखो फर्स्ट ईयर वाले को तो ऐसे डाउट्स होने भी चाहिए, अगर नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर में नहीं हो। बट इट्स गुड, मतलब डोंट फोर्स योरसेल्फ इफ योर पेरेंट्स आर सेइंग। Though I decided quite early in my life, it was never that my parents forced myself, though I was an only child to them. So it was always coming from my side. I actually forced them off कि हाँ मुझे ये करना, मैं यही करने वाली हूँ और कुछ नहीं करने वाली हूँ। So that is there and that should be the way things should be like. तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, if you are able to see your career in MBA, go for that and better not put yourself in UPSC because एग्जाम तो गंदा है, it will demand everything from you, it will shit your mind in every single way, so it demands अगर वो कंसिस्टेंसी, वो डिटर्मिनेशन अंदर से नहीं आ रही, you won't be able to do this. So you decide like आपको क्या करना है and then you talk to your parents over that. अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी कर पाऊंगी, then only do it, otherwise don't do it. Ma'am, ठीक है देव प्रभा?
Ma'am, actually, हाँ बोलिए. in 9th and 10th, I was like, yeah, I will prepare for UPSC. Then in 11th, I took PCM and I give JE. I qualified mains, but I failed in advance actually. So I don't go for NIT and YMCA college. I took CUT and then get in Mathri college. But ma'am, then my parents are like, yeah, you can do it. I was like, no, I can't. I failed in advanced paper, so it is not. UPSC is so much hard for them. Actually, my cousin is preparing. She has pursued BSc Chemistry honors and now MSc completed. Now she's preparing B.Ed and UPSC also. So I was like, she's employed at that age. So that demotivated me. Like she can earn money, but why she's staying and preparing for UPSC? So I was like, no, I can't do that. So that's the problem. So that's why I'm not able to decide whether I want to do what or not. UPSC would be unemployed for a good amount of time, and I was till the age of 23rd. So, and it can go a long way. So you decided that way. It's a genuine doubt. See to it whether you can put in that effort, put in that much of post, and put in that much of opportunity that you would be compromising on. अगर आपको लगता है you do it, otherwise there's no point of doing it. Diprabha. Okay. Then we move to Smriddhi. Smriddhi, Sia, Aryan, and Aman. Smriddhi, you ask your doubt, please. Good evening, ma'am. Hi, good evening, Smriddhi. Yeah. I'm Samriddhi Sahu, first year from Lady Shriram College, English honors. Okay. Ma'am, I had two doubts actually. First was we were talking about reading the newspaper. That I understand, and I know that it's very vital and necessary that I do that. But where do I start exactly? Because I don't really like reading the newspaper. It Nobody seems does, yeah. intimidating. I just dread actually picking it up. So if I'm reading, what sections am I supposed to actually remember? What is the content that is actually important that I should be keeping in mind? Like there should be there must be a pattern that I need to follow, right? I can't read the whole thing. Am I supposed to focus a lot on the sports section or not? And the Okay. second one was I didn't have economics in 11th and 12th. Mhm. So where do I start if I want to get the basics of it? Would NCRT Mhm. suffice, or is there some other book that might help me out? Okay. Yeah. So, for your first doubt, and everyone does have this doubt where to start and how to start with newspaper. The first thing I'd like to clarify, as you said, that newspaper is quite important and you can't do away with the newspaper. Now, how to do that? पूरा newspaper तो नहीं पढ़ सकते, उससे 4 घंटे तो नहीं लगा सकते. You can't just like you have limited amount of time in your hand. 24 घंटे ही तो है. So what to do? So firstly, you eliminate the portions out in the newspaper. क्या क्या eliminate करना है? You eliminate all the political news that is there. You are not supposed to read that. Then in the editorials, if you have read an editorial related to a particular thing before, you just read the crux out of that particular editorial. You don't read it thoroughly again. Then you skip states wala jo portion hai and the basic simple news which are there unless and until it's an important initiative that's having an important impact. Then in the sports portion, you mostly skip the things off unless and until you get an example that you can put in your answers. Then the economic portion, you skip most of the things related to the companies or the shares which is there. You are not supposed to look into that. So that cancels out around 50% of the portion which newspaper has. After that, as I said, that you pick up the syllabus. Like if you're dedicatedly getting into UPSC, before that you can read 50% of it. It's none of like a major business about it, and it can be easily done, and it actually helps to develop your knowledge also. Now, if you're dedicatedly getting into UPSC, you need to cover GS and other portion also. Then what you do, then you just link the portions with the syllabus. Like this thing is getting situated in this particular syllabus of the syllabus, a portion of the syllabus, and thus you link it that way, and then you read that thoroughly and remember that thoroughly. You remember that if you feel like you put it in your notes, and if you don't feel like you don't put it in your notes, then you recall it, and then that becomes part of your memory. You will be getting it in some means 365 or PT 365, and you will be able to put that in your answer. That's it. Now, then as you have said that economics wala jo part hai. So 11th and 10th, 12th की NCERTs, micro and macroeconomics. I don't 12th वाली NCERTs या 11th वाली जो बाकी जो portion है, which is about the economic development and everything, those NCERTs are not needed. Macroeconomic and microeconomics की NCERTs you can take up and you can read those. Now, even if like you can start with that, but if you don't feel like taking up books or anything, so Mrunal Patel sir की जो videos available हैं online, you can take those videos up, look at them, and that will also give you a good understanding of economics. So I think Smriddhi, that would do. Next we go to Sia.
Good evening, ma'am. Yes, Sia. Ma'am, I'm Sia and I'm pursuing political science honors from Lady Shri Ram College. So, ma'am, I want to ask that how to tackle mathematics and reasoning of the CSAT, because you Mm-hmm. can't clear CSAT with 3 months preparation. You can prelim, 4 but you days you can't can. CSAT. Okay. How to do that maths wala portion? Which year are you in, Sia? Ma'am, I'm in first year. Okay. So reasoning or mathematics, honestly, if to tell you, I didn't prepare for CSAT, and that was a mistake. But I could clear CSAT both the times. I prepared for 4 days and 1 day, but better you prepare for CSAT. So मतलब इतना कुछ मेजर उसके लिए करने की जरूरत नहीं लगती मुझे, क्योंकि इतना मैटर मतलब दिस ईयर तो CSAT वाज डूएबल, लास्ट ईयर CSAT वाज नॉट डूएबल. तो उसके लिए यू कैन टेक अप पिछले साल के पेपर्स, उसमें देखो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं. यूजुअली नंबर्स वाले क्वेश्चंस दे हैव स्टार्टेड आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन यू यूज YouTube की वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. आई थिंक पाथफाइंडर हैज देम.